Hello, welcome to a fresh episode of Mocca with Moiz. My guest today is a design researcher, a strategist, someone who often talks about urban planning on Twitter. Gulraiz, how are you? I'm good. How are you, boys? I am well. Firstly, thank you for coming on a Sunday. My pleasure. So, Gulraiz, the first question, Karachi kab theek hoga? I don't think there's a deadline. I think it'll always be a process, and I mean that's not just true for Karachi. I think that's true for any city in the world. But all of them are in a constant state. They're living things. Cities are fairly living things. तो ये मतलब कोई deadline नहीं है इस पे. So ये आपने अच्छी बात की कि cities are a living thing because हमारे I think policy makers को लगता है कि cities जो हैं they're only concrete and brick and mortar. और हमारे हम देखते हैं कि एक ऑब्सेशन है कि जो चीज़ें गरीब नज़र आती हैं उनको दूर कर दो शहर से. सो अगर हमें कोई ठेला वाला नज़र आता है उसको आप शहर से बाहर कर दें. एम्प्रेस मार्केट के ऊपर हम एक इंक्रोचमेंट ड्राइव कंडक्ट करके समझते हमने शहर को साफ कर दिया है. तो पहले ज़रा ये बताएं कि शहरों को अगर हमने कराची में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी चीज़ें कराची में देखना चाहते हैं बेहतर होते हुए, वो कौन सी 3 चीज़ होंगी बुनियादी तौर पर कि जो ना सिर्फ शहर को बेहतर करे बल्कि शहरियों की ज़िंदगियों को भी बेहतर करे? सबसे पहले तो जो सिर्फ जो गुर्बत है वो ये एक जहनी मुफलसी है, जहनी गुर्बत जो हमारे प्लानर्स पॉलिटिशियंस की है, जो जिनका ये नज़रिया है, जो इस तरह से देखते हैं कि जो चीज़ खूबसूरत नहीं लगे उनको हटा दो. इट इज़ एग्जैक्टली ये इनफॉर्मेलिटी. एक शहर जो अफोर्ड करता है इनफॉर्मेलिटी, मतलब ये कि जिसमें आप एक गाँव से अगर आप उठ के आते हैं और आपको यहाँ फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिली, आपने एक ठेला लगा दिया और आपने you start earning, right? Then you call your friends over and they start earning. This is what makes cities living things. This is what makes New York New York. Right? New York नहीं बनता अगर जो है people who moved from Europe से जो move करके गए थे through early 20th century that they couldn't settle in. अगर वो जो है वहाँ भी DHA बना देते और आपके ठेले हटा देते तो न्यूयॉर्क कभी वो शहर नहीं बनता जो वो आज है. Right? Likewise for any big city, this is exactly what makes cities, it makes them vibrant, right? Because it's not just people who are coming, it's also their ideas, right? They bring their culture. The culture, yeah. They bring so much to it, right? And that is what Karachi has benefited and Karachi, from. Sorry to cut you, but Karachi is one city which has been shaped by people coming in and Absolutely. the culture that they brought here. And not to take away from people who've lived here for centuries, right? I think abhi jo is a lot of the conversation jo around Bahria town mein ho rahi hai, it's about people whose villages have been here for centuries, right? So I don't want to, I know this becomes a hot topic. I think both of them are equally important, but what is important is to be accommodating, right? So I think to have a city that is always growing, that is living, that is vibrant, you have to make sure there are a few sort of ingredients in place, right? That people who come here, जो पहली दफा आए, like they can figure out a way to live and start earning, right? अभी भी आज भी न्यूयॉर्क में, क्वींस में, there are dormitories जहाँ पे एक कमरे में 8 लोग रहते हैं. Now I'm not saying that is ideal, but अगर वो उस तरह की चीज़ ना हो, so a lot of people who migrate for the first time from very very low income backgrounds, वो कभी वहाँ ना जा सके, राइट? हर कोई जाके मैनहट्टन में नहीं रहेगा, हर कोई फॉरेन स्टूडेंट नहीं है जो एक फुल ब्राइट मेरी तरह या आपकी तरह जो है वो वहाँ पे जाके रहेगा. सो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ create that space for that to happen, right? Of course, acha, now that they're here, how do you provide them basic services, right? And one of the key service is of course mobility, right? And that's one I'm really passionate about because यार अगर mobility होती है ना तो आप अगर सोहराबगोट में भी रहते हो और आपको नौकरी मिलती है चौधरी के रोड पे, आप जा सकते हैं. अगर mobility नहीं है तो आप सोहराबगोट से आप नाज़िमाबाद भी नहीं पहुंच पाएंगे, right? It's a huge city. It's about 40 kilometers I think end to end in both directions, right? So I think that is the other thing. Cheap, affordable, good quality mobility that is dependable. अभी अगर when I was driving here, I live in PCHS, so मैं यहाँ आ रहा था, and I was thinking अगर मेरी अपनी गाड़ी नहीं होती या I didn't have a lot of money for Kareem, I would have not been able to come here, or we would not have had this conversation, right? Because if you don't have access to mobility, you don't have these opportunities, right? Or yeah, exactly. And I think that's the other thing. And of course, the third thing is access to justice, right? And making sure that, they have rights, those, that they have access to food and safety and all of these things, right? So all of these things come with it. लेकिन अगर आप इनफॉर्मेलिटी को बिल्कुल वाइप आउट करने की, जो कि अभी इंक्रोचमेंट ड्राइव वगैरह कर रही है, राइट? उनका मकसद ये है कि नहीं भाई ये इल्ली, सो बहुत से लोग ट्विटर पे बड़ा स्विच होना चाहते हैं कि नहीं बट दे आर इलीगल, राइट?
I mean, the Prime Minister's house was illegal, right? There are lots of illegal structures we can. बहरी के भी आपने रेगुलराइज किया था बाद में. Right, ये सारे अभी भी कल या परसों I think there was a news item जिसमें some CDA director said कि जो businesses हैं इस्लामाबाद में उनको अब regularize कर दें, right? जो illegal है, तो वहाँ तो बड़े आप फरागदिल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ एक किसी का ठेला आता है वहाँ आपको लॉ ज़्यादा जाता है. तो I think ये एक ज़हनी मुफलिसी है. दिस इज द पॉवर्टी एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू वाइप आउट. और जो आपने उसकी बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसका एक डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है ख़वातीन के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मर्द हैं तो शायद आप रात 11 बजे भी अपने दफ्तर से निकल के रोड पे बस पे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक औरत हैं तो आप एक अपॉर्चुनिटी शायद इसलिए ना लें कि मैं जाऊँगी किस तरह, मेरे पास कोई अफोर्डेबल और एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. I mean, and not hardly surprising, the labor force participation of women is very, very low. I think the lowest in the region, definitely in South Asia. I remember the only other South Asian city outside of Pakistan जो मैंने देखा is Nepal, Kathmandu, and over there, I think the first thing that struck me was सड़क पे आपको ख़वातीन नज़र आती हैं, ऑफिस जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, public transport में. And it was very shocking. Even in Delhi, by the way, जहाँ पे हमारे लोग कहते हैं कि रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे आपको उनकी मेट्रो के अंदर बड़ी ख़वातीन नजर आती हैं. And part of this is because metro, right? I remember when the Delhi metro opened, we had a delegation, 2006 I think, lums आए थे India से, young students, and they were so excited. Suddenly their life had changed. That they could go, वो गुड़गांव में रहते थे या कहीं भी, and they could go to the city, they could access things. And I mean, my hope is the same for Lahore, but you also have to realize कि यार ये magically नहीं होता. Once you build something, then the city will respond to it. It's a living thing, like I said, right? So if a cut hota hai, your body responds to it to heal it. Likewise, when you do something like this, it will take time for people to change their behaviors and patterns. And then, in 5, 10, 15 years, then you'll see how well embedded it becomes. अच्छा, एक जो हम चीज़ देखते हैं जो बड़ी तनकीद होती है, आपने लाहौर मेट्रो की बात की कि जी इतनी सब्सिडी दे रहे हैं शहबाज शरीफ इसके ऊपर, पीएमएल ने इसको डिज़ाइन बहुत बुरी तरीके से किया. एंड आई नो दैट यू बीन टू अ नंबर ऑफ मेट्रोज अराउंड पाकिस्तान एटलीस्ट, ठीक है. तो अगर आपको मैं कहूँ कंपेयर करें इन डिफरेंट मेट्रोज को, आपने पेशावर की भी देखी है, मुल्तान की भी गालिबन देखी है, लाहौर की भी देखी है, मुल्तान की नहीं देखी, लाहौर की देखी है, इस्लामाबाद की देखी है, इस्लामाबाद की देखी है, पेशावर की देखी है. सो हाउ डू यू कंपेयर देम? एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इस पे पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बिकॉज एक गरीब मुल्क के अंदर यू पिकिंग एंड चूजिंग कि मैं इस चीज़ पे खर्चा अगर आप मेट्रो पे करें तो आप किसी और चीज़ पे नहीं कर रहे खर्चा. सो डू यू थिंक दैट द मेट्रो इज एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट एंड डू यू थिंक दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज जस्टिफाइड? So, well, I think this is just, I don't agree with the question actually. Okay. And I'll tell you why. कोई इतनी पहाड़ जितनी सब्सिडी नहीं दे रहे आप, सही है. I think it's 2 billion rupees per year annum, right? And we spend far more on subsidy, direct subsidy to, let's say, our sugar industry, to steel mills, to PIA, to all of these state-owned enterprises, far more of a magnitude. That's 75-80 billion, उनको देते हैं आप. So, I mean, this is not even a subsidy. So, सबसे पहले, right? अच्छा, दूसरा, यार, public transport as a model, it's a public good, right? आप सड़क पे स्ट्रीट लाइट्स को तो देते हैं ना सब्सिडी. आप जो सड़क बनाते हैं, आप जिन गाड़ियों के लिए आप एक्सप्रेस वे बनाते हैं, हाउ इज दैट नॉट अ सब्सिडी? वो भी कॉस्ट है ना. उस कॉस्ट को हम सब्सिडी क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? इट इज टेक्निकली ए सब्सिडी फॉर कार ओनर्स. उसमें आप कहेंगे कि अच्छा ये भी नहीं हो तो कोई जाने के, तो आप बैलगाड़ी में चले जाएं. आप जाना ही अगर मकसूद है, रोड तो हम गाड़ियों के लिए बनाते हैं ना, कि गाड़ियाँ स्मूथली जा सकें. तो व्हाई इज दैट नॉट थॉट ऑफ एज अ सब्सिडी? हाउ मच डू वी स्पेंड एनुअली ऑन बिल्डिंग रोड्स? एंड नॉट जस्ट रोड्स. एक और सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक इफेक्टिव हेल्थ, अगर आप एक इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं तो आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फॉर एग्जांपल अवॉइड करें. आई मीन हेल्थ तो देखें, वो बहुत बाद में आता है. मैं तो सिर्फ पहले द राइट फॉर पीपल टू बी एबल टू मूव easily in a city, ठीक है. And I don't think this is even a cost that is worth, like it's not even that much of a cost. But that's probably also because जो लोग ये वाली बात करते हैं, उन्होंने खुद अपनी गाड़ियों में जाना, तो उन्होंने खुद कभी मेट्रोस में नहीं जाना. And this which is why I think बड़ा sinister है वो. ये stupid नहीं है वो लोग. उनको पता, देखो ये अभी पेशावर में जो है ये काफ़ी इस पे हुआ था कि जब मेट्रो बनी है तो गाड़ियों की जगह कम हो गई है, right? So there's a lot of backlash towards it, okay? Which is why it was really funny recently. I think there was a sponsored trend on Twitter where and someone spotted it, like lots of people putting the same post, which was, oh, there was so much traffic, I abandoned my car. Yeah, I saw that. Yeah. Right? That is in some way, I think, their response to the backlash against the fact that they've taken up road space, right? I mean, it's a stupid way to go around it, but there it is. Of course, car owners know कि यार अगर मेरे से एक लेन ले ली गई तो उनकी वही ना, एक ज़हनी मुफलिसी है. तो उनके जहन में तो वो वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना, कि मैं जिसमें तकलीफ में आऊँ.
क्योंकि अब तक पाकिस्तानी स्टेट ने हमेशा बेनिफिट किया है और उनके लिए बनाई है, ये शहर उन्हीं के लिए बनाए जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास अच्छा घर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं टैंकर से पानी डलवाना, तो उन्हीं के लिए तो शहर बना है. तो यू नो इट्स शॉकिंग फॉर देम कि दैट वी कैन इमेजिन समथिंग अल्टरनेटिव जिसमें वेयर दे आर नॉट at the top of the food chain, right? And I think this has been the reaction. So this is where I think that question of कि वो subsidy देनी चाहिए, is it worth it? We're taking away from health. Well, are you not taking away from health when you're building roads, or other things or whatever, tons of other things. So that's why I don't agree with that question. Okay. अच्छा, एक और जो चीज़ अभी हमने बात करी कि अमीरों की गरीबों की, लेकिन ये चीज़ है जैसे कराची में अमीर गरीब सब शायद लाइक एक ही तरीके से सफ़र करते हैं, और वो है कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग. और इसमें एक एलिमेंट क्लाइमेट चेंज वाला भी है, बट एक एलिमेंट बिल्कुल आपका बुनियादी है लोकल गवर्नमेंट्स वाला कि आपके नालों की सफाई नहीं होती. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तो बिल्कुल सरफेस लेवल बात है कि जी नाले साफ नहीं हो रहे इसलिए पानी कराची में जमा हो रहा है, बट कराची के इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या मसाइल हैं, या हमारे स्ट्रक्चर है शहर का इसमें क्या मसाइल हैं कि हर साल हम ये अर्बन फ्लडिंग देखते हैं और ये पिछले 8-10 साल से बेहतर नहीं हो पा रही. Yeah, so a lot of this work has already been done and talked about by people like Arif Hassan, Parveen Rahman had done a lot of work on this. इसके वो आरिफ साहब कहते हैं कि 2-3 बुनियादी मसले हैं. एक तो यही है कि नालों की सफाई नहीं करते आप, राइट? बट नालों की सफाई नहीं करते इज़ नॉट द सेम जो कि पंजाब में होता है, वो भल सफाई होती है जिसमें आप क्लियर करते हैं. जिस शहर में सॉलिड वेस्ट का सिस्टम ही ना हो तो वो सारा सॉलिड वेस्ट नालों में जाके पड़ जाता है. ठीक है, तो असल मसला ये नहीं कि नालों की सफाई नहीं हो रही, असल मसला ये है कि वी डोंट हैव अ सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम. ठीक है, उसके अपने अलग मसाइल है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वाज डिफंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट केम अंडर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, वो डिफंडेड था. बट ऑल्सो स्ट्रक्चरली कुछ मसले ना, पूरे शहर का आपकी जो लैंडफिल साइट थी वो जाम छाकरो जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में हब की तरफ है. अब आप कोरंगी से एक ट्रक कचरा उठा के 40 किलोमीटर वहाँ जाके फेंक के आएगा क्या? उसका कोई इंसेंटिव ही नहीं था, उसको फ्यूल कॉस्ट उसकी तो वो रास्ते में डंप कर देते थे, राइट? सो सॉलिड वेस्ट वाज नेवर थॉट ऑफ एज अ सिस्टम, राइट? अब वो सॉलिड वेस्ट सारा आपके नालों में जाके गिरता है और उसको साफ कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? जो नाले जो वाटर एंड सीवेज बोर्ड कहता है वो तो कहता है मेरा तो काम नहीं है सॉलिड वेस्ट उठाना, राइट? इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी विद राइट नेक्स्ट टू व्हेन आई वाज टीचिंग एट हबीब यूनिवर्सिटी, देयर इज अ नाला देयर ऑलवेज फिल्ड विद सॉलिड वेस्ट and obviously some water running through it. So the solid waste is someone else's responsibility. The nala and the water that flows through it is someone else's responsibility. ठीक है, वो and the land on which the nala is comes under someone else's jurisdiction. तो वो civil aviation authority की jurisdiction में था. और जब एक प्रॉब्लम के 3 overlapping authorities होती हैं, that is a classic sort of case for where no one will do anything because वही उसे पे डालते रहेंगे. And so that I think is the primary problem for Karachi. सबसे पहले. दूसरा, and the one that they talk about, is the exit points. So the city, of course, there's a natural terrain to it, right? It's a hilly region. वो hills से नीचे, and so आपकी जो लियारी नदी और मली नदी, these are not perennial rivers, right? वो seasonal होती हैं जब वो पानी आता है आपका, and they're supposed to flow down to the sea, right? Now, of course, at the sea, you've blocked it. One of the key is phase 7 extension चाहिए, और कोरंगी क्रीक के साथ आप उसको ब्लॉक करते गए. तो अब वो अब वहाँ पे भी आपने ब्लॉक कर दिया है, पीछे नालों में भी आपने जो है सॉलिड वेस्ट डाल दिया है, तो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ से खाली जगह मिलेगी, और वो खाली जगह क्या है? शार फैसल आपके रोड, तो वहाँ गया, and that's why your road became rivers. And so I think I mean there's much smarter people who've talked about this. Of course we don't want to listen, and of course people, because there are multiple people in charge, there isn't a sole authority. And I think that's really what I think Mustafa Kamal spoke about this also during his tenure as mayor. All mayors have spoken about this. Mustafa Kamal ने भी बोला था, उससे पहले नेमतुल्लाह खान ने भी बोला था. So जो भी आता है, they've all spoken about this. And देखो elected mayors का, so before we started you said कि local bodies, and I said it's laughable because एक सिटी जिसकी इतनी ज़्यादा jurisdiction हो, तो जब जो भी इलेक्टेड मेयर होता है, आई थिंक उसके अंडर जो एरिया आता है, it's less than 25% of the city. I think it's 37%. Or 37. Like I mean, it's a laughable percentage, right? The rest of it comes under cantonments. So like cantonment, that's a cantonment, right? Or federal institutions like railways, civil aviation, ports and shipping, right? तो ये सारा आप जब निकाल दें, अच्छा अपनी jurisdiction में ये लोकल गवर्नमेंट को नहीं काम करने देते, राइट? सो DHA में जाके आपकी सुवेज लाइन्स नहीं ले करेगी लोकल गवर्नमेंट, राइट? वो अपने दे मेंटेन देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर.
So I think it's pure. So in that, how do you do it? And I mean, one of the reasons why, and I give this, I mean, I give New York examples. That's the only one I know of. When they consolidated the 5 boroughs I think it was 1899, when New York City became the city with 5 boroughs. Usse pehle Brooklyn was a separate city. These are all separate cities. They consolidated, and part of this consolidation drive, funnily, was led by big bankers because they realized you cannot have big infrastructure projects unless there was some consolidation. But the counter argument to that, for example, is कि लाहौर को हम देखते हैं कराची से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है. DHA लाहौर के अंदर भी है, कैंट DHA के कैंट लाहौर के अंदर भी है, and Lahore also has these federal agencies. So अगर हम to play the other side's argument कि कराची में अगर हम कहते हैं कि इतने इख्तियारात नहीं है एक सिंगल गवर्नमेंट के पास, तो लाहौर के अंदर हम DHA को देखते हैं, वहाँ पे do they have the same system, या फिर वहाँ पे आप कर सकते हैं DHA के अंदर इस तरह से? Yeah, so कराची में देखो, you have another layer which is the disparity between the city and then the provincial government. Yeah, okay. Right? तो एक कराची में फिर वो 3 layers है. So एक फेडरल की अलग लेयर है, प्रोविंशियल की अलग है, सिटी की अलग है, right? So लाहौर में आपकी 2 layers are the same. City and provincial is always the same almost, right? Because of their politics. Now, you raise a good point about DHA in Lahore, right? And a significant chunk of Lahore is under DHA. Maybe even, I think as a percentage, might be even be greater than Karachi ke jitna area aata hai. Now, I don't know what their arrangement is with LDA and how they hook up their infrastructure and stuff, right? And I think it'd be worth looking into. I have no idea about this. But the lack of contestation between city and province, I think, definitely leads to slightly better outcomes over there. And I mean, to further your point, this is perhaps the first time in a while where there's a government in Punjab जिसकी लाहौर की representation नहीं है, और हम देख रहे हैं लाहौर की, and then लाहौर में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यार, कचरा नहीं उठ रहा, you know, all of these things, and which is why I think, and I know this makes a lot of people very uncomfortable. Our best bet, I think, to sort of improve things is to strengthen the provincial government's role in our cities, city में, कि वो ले चुके हैं power, right? या तो अब लड़े यहाँ बैठ के और फिर आप उनसे लें वापस, ठीक है? But also to be able to argue with federal institutions, you need someone with at least some weight. That will not be a city government, a municipally elected government, right? You need the political clout of a party that sits at least at the provincial level, sort of thing. And that's why we see things in Lahore get done faster. Now, and I give this with a pinch of salt, I'm not a political scientist, or, you know, and of course they will have a better opinion on this. But we've seen over the last 6-7 years, the Sindh government sort of consolidate power. So garbage unhone provincial level pe le liya, which is really counterintuitive. Like, why would garbage be a provincial sort of subject? Unhone building control authority provincial us pe le li, right? So they're trying to do this. Well, then make them sit down and ask them, what's your end game then, right? Sure, you take all the power, then what are you going to do, right? How will you then run the city? Do you have a plan, or is it just power, just accumulating power for the sake of it? अच्छा, आपने गुलरेज से भी बात करी, हमने बात की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हमने बात करी कि सिटीज आर लिव्ड एक्सपीरियंसेस. तो एक जो ना सिर्फ कराची में बल्कि कराची से बाहर एक मेरे लिए बड़ी ट्रबलिंग सी एक टेंडेंसी है कि हमारे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट जो शहर का कल्चर हम उसको मिटाते जा रहे हैं. सो लाहौर के अंदर हमने देखा कि जब ऑरेंज लाइन बनी तो देयर वर कंसर्न्स दैट इट्स, यू नो, एंडेंजरिंग सर्टेन हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट्स. कराची के अंदर भी हमने देखा कि कुछ हेरिटेज साइट्स को रिस्टोर किया गया और बहुत बुरी तरीके से रिस्टोर किया गया. सो अगर कराची को हम देखें, सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू रिस्टोर और जस्ट, यू नो, प्रिजर्व ऑल दीज हेरिटेज साइट्स? इफ यू फॉर एग्जांपल गो टू फ्रेयर हॉल समटाइम्स, the building itself is in a dilapidated condition as well. So इस तरह हमारे पास वैसे बड़ी चंद एक रह गई हैं cultural sites, heritage sites. So उनको, how do you think हम इनको बेहतर बना सकते हैं? This is a very difficult question because I'm not a heritage expert by any means. So I don't have any command over this subject. I was recently reading up a book. I think this was on, and part of it was on Bombay, right? And even like what we've seen in New York, heritage को आप showcase में तो नहीं रख सकते. So that's my first reaction. I grew up around Burns Road in one of these really old buildings, and as a living structure, it was hell to live in because the pipes were so old. वो हर वक्त टूट रहे हैं, right? And people who live in a lot of these heritage places aren't very high income. They're very middle income or lower middle income, right? And that was our experience. We couldn't afford to, you know, keep up like fresh paint and all of these things. Now,
sometimes this restoring heritage argument, especially when it comes to living quarters of people, right? And a lot of in Karachi is when you go down south of the road, लोग रहते हैं वहाँ पे, right? तो आप क्या कह रहे हैं कि whose responsibility is it, right? अच्छा जब state की responsibility तो वो जाके नीला पीला रंग कर देती है. So what about agency of people, right? So I think we need to see it. Like, I think this is a little bit more complex than that. I understand if it's a commercial building or if it's a, if it's a Bank Plaza or whatever, that's different. Sure, preserve it, right? But when it comes to living quarters, now if I have a house in one of this, it should be my choice if I want to sell this and move on somewhere, right? Yeah. And how do you take that right away from someone? Do I tell someone living in Clifton, and let's say कल क्लिफ्टन में एक बिल्डिंग होंगी 100 साल की हो जाएंगी, तो हम ये अपार्टमेंट वालों को जाके बोलेंगे जमजमा पे कि आप बेच नहीं सकते, ये हेरिटेज है. So how will we react then? Right? So is it just age of a building? I don't have any of the answers. I just have questions because I'm not an expert on this. And I think, having lived through this, I think this is a little bit more complex, especially when it comes to places. And you could end up having a city as dead as Geneva. Like, anyone who's been to Geneva, it's like a dead place. It's beautiful. All the buildings are preserved, but it's dead, right? Is that what we want to create? Or, and we admire like the, Androon Lahore, ki wo abhi bhi uska culture hai, because people still live there and they've lived there in whatever conditions allowed them to live through it. And it has not been very pleasant. So I think there's a lot more nuance to this conversation. Okay. अब एक जो मेरे लिए बड़ा important सवाल है कि अब हम दुनिया भर में देखते हैं, जो आपने शुरू में हमने बात की थी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि अब एक पहले हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर कराची पे एक ऑब्सेशन है कि जी मेगा डेवलपमेंट का. एंड आपने परवीन रहमान की बात की थी, शी यूज्ड टू से कि हमने मेगा डेवलपमेंट नहीं, हमने मेगा प्लानिंग करनी है. और अब लोग देख रहे हैं कि किस तरह अपने शहरों को और वॉकेबल बनाना है. और आपने मुझे एक किताब का भी बताया था, which spoke about how to make cities more livable, and it said that cities that were more walkable also had higher rates of economic development and all these things. So अगर हम आपसे कहें कि कराची में 3-4 क्या बुनियादी impediments हैं to make इसको वॉक करने के लिए, इस शहर को वॉकेबल बनाने के लिए, तो वो क्या होंगे? I mean, so when one argues for walking, it is not for the sake of walking. कोई मतलब शौक नहीं है हमें कि बस वॉक करने चले हर वक्त. A walkable city base. So when you walk to get something done, that basically means that you're not taking your car out. ठीक है, मतलब वो ट्रिप जो है आप is not a burden on the environment. My दादी used to get her groceries, तो वो मुझे लेके जाती थी गाड़ी खाते असेंबली मार्केट भी पूरा. She would walk. This is a 60-year-old woman, right? वो चलती थी, वो लंडा बाजार से होते हुए पूरा तक जाती थी, टोकरी में सामान लेके आती थी. Now that same trip by me from my house to Spar is taken in a car. ठीक है, so there's an environmental impact to this. I create congestion, I create traffic, right? And so no one is saying that शहर से गाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी. यार, it's a big city, of course there'll be some cars you will need, but how many of these trips can we reduce to walking? Now what has happened, unfortunately, because you built the city for the car and you built it so unfriendly for people to walk, even in those neighborhoods. So I have a lot of family that lives around Burns Road and Gadi Khata mein, they switched from walking to motorbike. So motorbikes became affordable, right? So for even the smallest of thing, सब्जी भी अगर लेने जाना है, जो कि मुझे when my mom sent me हमारा बाग से बर्नसोर तक, it was like a 10-minute walk back and forth. दही भूल गई, मिर्ची ले आओ. अब someone my age over there will do the same on a motorbike, right? So you've created a world where even those small sort of walks जो थी, which kept us just active and healthy, are gone. And the idea also is that जो आप पैसे बचाते हैं अपनी रोड ट्रिप पे, you spend that on the local economy. आप उस पे कोई दही खरीद लेंगे, आपका अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद लेंगे. So you spend, around the shops and stuff around yourself, right? So you support the commerce in and around. So I think that, that has changed, right? So even in these, and I think there's an urbanist, Aisha, based out of I think Rawalpindi, right? She's doing a lot of work in Rawalpindi में and Androod शहर. I think these are things that she's arrived at कि motorcycle जो है ना has become such a, उसने वो छोटी walking trips को भी replace कर दिया है. Sorry Aisha if I'm bastardizing your research, but from what I remember having read from her posts, वो यही था कि और ये मोटरसाइकिल बड़ा एक ये behavior change हो गया है और ये पिछले 10 साल में हुआ है. अब अगर आप वहाँ पे जाके लोगों को कहेंगे कि आप बाइक छोड़ दें तो बड़ा शोर मचाएंगे कि भाई आप क्या मतलब आप हमसे ये भी छीनना चाह रहे हैं, राइट? सो आई थिंक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया. सो विच इज व्हाई आई से डू नॉट हैव टू स्टार्ट चेंज फ्रॉम देयर. व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांजिट, लाइक लुक एट योर बिग पीसेस ऑफ ट्रांजिट,
people will adapt to it. So ये Peshawar में, when I went recently, I was going around with our एक sales agent था, for the bank, and I asked about the bus rapid transit, and he said कि हाँ सर, पहले तो मुझे point to point जो है मैं उसमें जाता था मोटर बाइक में, बट अब मैं घर के पास से मैं वॉक करता हूँ 5 मिनट, मेट्रो में आता हूँ, और यहाँ मेरा सारा सदर में काम होता है, तो मैं यहाँ पे he gets off and then he walks around and stuff, and like and this is like within a few months of the BRT opening. So, and this is just one person, right? So, and I'm sure there are similar sort of so build it and people will change. अच्छा, हमारा आखिरी सवाल, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी रिसेंटली व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एज वेल, एंड दैट सेड दैट एक ऑप्टिमल लेवल होता है कि आप अगर एक बीआरटी बनाते हैं फॉर एग्जांपल या मेट्रो बनाते हैं, तो इतनी परसेंटेज ऑफ लोग आपके शहर के उसको यूज कर रहे हैं, एंड दैट ऑब्वियसली हैपेंस ओवर टाइम. ये नहीं होता कि आपने आज बना दी, बट इसकी कैपेसिटी कितनी है ऑब्वियसली. और वो कह रहा था कि जो कराची में ये ग्रीन लाइन बन रही है, जो ब्लू लाइन बन रही है, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो शहर के ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें. सो हैव यू डन सम रिसर्च इनटू द कराची मेट्रो जो भी बनने जा रही है? ये देखो, सो आई बीन गोइंग थ्रू द इनकी जो फिजिबिलिटी थी और कराची ट्रांसपोर्ट जो जायका का प्लान था, इट्स एंड आई रोट पार्ट ऑफ दिस इन माय पीस दैट आई रोट ऑन द लाहौर मेट्रो. एक लाइन, एक बहुत छोटी पॉपुलेशन, व्हेन आई थिंक आई गिव एग्जांपल ऑफ 100 पीपल एंड आई सेड कि अगर 100 लोग एक शहर में रहते हैं और अगर एक लाइन बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लोगों को सर्व करेगी. नाउ दैट साउंड्स रियली स्मॉल, ठीक है, बस सिर्फ 2 लोगों के लिए हम लाइन बना रहे हैं इतनी. इस पर नहीं भी नहीं, आप जो फॉर इंस्टेंस ग्रीन लाइन पे आपके मखाल से 25 बिलियन रुपए तो खर्च हो चुके हैं 2 लोगों के लिए, 2% ऑफ द पॉपुलेशन. एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉट सरप्राइजिंग यार, क्योंकि देखो एक लाइन इन अ सिटी मींस सो जो लोग उसके पास ही रहते हैं वही उसको ले सकते हैं, एंड देन जो जहाँ जाना चाहते हैं इज ऑल्सो ऑन द लाइन, राइट? So you will never see the impact on just one line. It is when you build out a network, right? And then gradually, so वो 2 से दूसरी लाइन बनेगी, वो फिर 2 से 4 नहीं होंगे, वो 2 से 6 हो जाएंगे. And then when you add the third line to it, and so it's when you build out a network and then supported by paratransit network, जो कि लास्ट माइल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा, क्योंकि लोग मेन नाज़िमाबाद में मेन रोड पे नहीं रहते, अंदर गलियों में भी रहते हैं ना, तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? And this is a problem जो कि even cities like Berlin or New York or whatever, they're constantly solving. How do we sort of like solve for this last mile problem? They have robust networks, right? या तो पूरा शहर इतना walkable हो, या पेरिस की तरह हो कि within the periphery of the Paris, you are never, I think, more than 500 meters away from a station, metro station. तो या तो आप स्केल पे चले जाएं, ठीक है, but we cannot afford to get there. So I, for example, Delhi की मैं अगर मिसाल दूँ तो वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि every station that you get out of, तो वहाँ पे वो चिंची ड्राइवर्स हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, and they will take you to your, that's right. So these things are, so एक लाइन पे कभी भी नहीं होगा. Just to answer your question quickly, you will have to build out a network, right? Of course, and you will begin to see and most importantly, once you build this out, the city will change in response to that, right? So people will get houses that are closer to the line. जो कि न्यूयॉर्क में, right? You get when I don't know, when I went to school, I looked for a accommodation जो कि सबवे के स्टेशन के पास थी, right? तो वो एक बिहेवियर मुझे, I knew कि यार सस्ता होगा मेरे लिए, right? Likewise people will, और ये नाज़िमाबाद में you'll start seeing already apartment blocks बन रहे हैं ग्रीन लाइन के साथ, so that's how they've been publicized. Some apartment buildings I know have been sold to builders who are building large buildings over there. Yes, right. So then offices will move closer to stations, right? So this is how the city will respond. So and you have to let that happen. ऐसे तो नहीं, magically तो नहीं होगा. Thank you so much, Gulraiz. And आज हमने बात की कराची की, हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की और किस तरह हम अपने शहरों को और बेहतर बना सकते हैं. Until next time, keep watching.